गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पंचमे युद्धखण्डे अथ षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः। नारद उवाच। कृष्णे गते दार्कायामनिरुद्धेन भार्यया अकार्षुतिकं ततो बाणस्तत्त्वं वद महामुने। सनत्कुमार उवाच। कृष्णे गते द्वारकायामनिरुद्धेन भार्यया दुःखितोऽभूत् ततो बाणा स्वज्ञानं संस्मरन् हृदा। ततो नन्दीशिवगणो बाणं प्रोवाच दुःखितं दैत्यं शोणितदिग्दागमनुतापसमन्वितं। नन्दीश्वर उवाच। बाणशङ्कर सद्वक्तमानुतापं कुरुष्वभो भक्तानुकम्पी शम्भुर्वे भक्तवत्सल नामधृक तदिच्छया च यज्जातं तज्जातमिति चेतसा मन्यस्व भक्तशार्दूल शिवं स्मर पुनः पुनः मन्नाद्य समाधाय कुरु नित्यं महोत्सवम्। भक्तानुकम्पन्नक्षास्य शङ्करस्य पुनः पुनः नन्दिवाक्या ततो बाणो द्विषाशीर्षकमात्रक शिवस्थानं जगामाशु धृत्वा धैर्यं महामना। गत्वा तत्र प्रभुं नत्वा रुरो दातीव विह्वला गद्गर्वव्रजो बाणा प्रेमाकुलितमानसा संसुतुव विविधे स्तोत्रे सन्मनुतिस्तथा यथोचितं पादघातं कुर्वन् विक्षेपयन्करान् अनर्थताण्डवं मुख्यं प्रत्ययालीडादिशोभितं स्थानकैर्विविधाकारैरालीडप्रमुखैरपि मुखवादसहस्राणि भ्रूक्षेपसहितान्यपि शिराकम्पसहस्राणि प्राप्तनीकसहस्रश वरीक्षविविधाकारा दर्शयित्वा शनैः शनैः तथोशोणितधाराभिः सिञ्चयित्वा महीतलं रुद्रं प्रसादयामास शूलिनं चन्द्रशेखरम्। बाणासुरो महाभक्तो विस्मृतात्मगर्तिनर्थ ततो नृत्यं महत्कृत्वा भगवान् भक्तवत्सला उवाच। बाणं संहृष्टो नृत्यगीतप्रियो हरा रुरुवाच। बाणतात बले पुत्र सन्तुष्टो नर्तनेन ते वरं गृहाण दैत्येन्द्र यते मनसि वर्तते। सनत्कुमार उवाच। इत्याकर्ण्यवच शम्भोर्दैत्येन्द्रेण तदा मुने बाणेन संवृणीतो भूधरस्तु वृन्नरोपणे बाहुयुद्धस्य चोत्तिदीर्घान् पत्यं उषापुत्रस्य राज्यं तु तस्मिन् शोणितकावये निर्भरता च विबुधैर्विष्णुना च विशेषता न पुण्यधैर्यता दुष्टा रजसा तमसायुता शम्भुभक्तिर्विशेषेण निर्विकारा सदा मुने शिवभक्तेषु च स नेहो दया सर्वेषु जन्तुषु इति कृत्वा वरान् शम्भोर्बलिपुत्रो महासुरा प्रेम्णाशुन् यनो रुद्रं तुष्टाव सुकृताञ्जलि। भानुवाच। देवदेव महादेव शरणागतवत्सला त्वां नमामि महेशान दीनबन्धो दयानिधे कृतामयि कृपातीव कृपासागर शङ्कर गर्भोपहारित सर्वा प्रश्नेन मम प्रभो त्वं ब्रह्मा परमात्मा हि सर्वव्याप्यखिलेश्वरा ब्राह्मणतनुरुग्रेशो विराट सर्वान्वितपरा नाभिर्नभो गिर्वदन्मम्बुरे तु दिशाश्रुति द्योशीर्षमड्गिरुर्वीते मन्श्रन्दस्त्वप्रभो दृक्रोजठरं पार्थिर्भुजेन्द्रोधिषणाविधि प्रजापतिविसर्गक्ष धर्मो हि हृदयं तव रोमान्योषधयो नाथ केशाजलमुत्सत्तव गुणस्त्रयस्त्रिनेत्राणि सर्वात्मा पुरुषो भवान् ब्राह्मणं ते मुखं प्राहु
बाहुक्षत्रियमेव च उरुजं वैश्यमाहुस्ते पादजं शूद्रमेव च त्वमेव सर्वदोपास सर्वजीवेमर्हेश्वर त्वां भजन परमामुक्तिं लभते पुरुषो ध्रुवं यस्त्वां विसृजते मत्यर्आत्मानं प्रियमीश्वर विपर्येन्द्रियार्थं विश्वमत्यमृतं त्यजन् विष्णुर्ब्रह्माथ विबुधा मुन्यक्षामलायशया सर्वात्मना प्रपन्नास्त्वां शङ्करं प्रियमीश्वरं सनत्कुमारवाच इत्युक्त्वा बलिपुत्रस्तु विराम शरासुरा प्रेम प्रफुल्लिताङ्गः प्रणम्य स महेश्वरम् इति श्रुत्वा स्वभक्तस्य बाणस्य भगवान् भव सर्वलभ्यष्यसीत्युक्त्वा तत्रैवान्तर्धीयत तथा शम्भो प्रसादेन महाकालत्वमागता रुद्रस्यानुचरो बाणो महाप्रमुदितोऽभवत् इति किल शरनामना शङ्कर्यास्पीवतं सकल गुरुजनानाथ सद्गुरुशूलपाने कथितमिह वरिष्ठं श्रोत्ररम्यैर्वचोभिः सकलभुवन्मध्ये क्रीडमानस्य नित्यमिति श्रीमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां पंचमे युद्धखण्डे बाणासुरगणपत्व पदप्राप्तिवर्णनाम षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः अथ सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः सनत्कुमार उवाच श्रीणुव्यास महाप्रेम्णा चरितं शशिमौलिना यथावधि त्रिशूलेन दानवेन्द्रं गजासुरं दानवे निहते देव्या समरे महिषासुरे देवानां च हितार्थाय पुरा देवा सुखं ययुः तस्य पुत्रो महावीरा मुनीश्वर गजासुरा पितुर्वधं हि संस्मृत्यं कृतं देवया सुरार्थनाथ स तदैरमनुस्मृत्य तपोऽथ गतवान् वने समुद्दिश्य विधिं प्रीत्या तताप परमतपा अवध्योऽहं भविष्यामि स्त्रीपुंभिकां निर्जिते सन् विचार्यते मनसा भूतपरोतमानसा स तिपेहिं वध्रोण्या तपा परम दारुणम् ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टिपादाङ्गष्टा श्रितावनी जटाभारे स वैरेजे प्रलयार्कयिन्वाशुभि महिषासुरपुत्रोऽसौ गजासुर उद्धारधि तस्य मूर्धनं सुबद्भूत सधूमोऽग्निस्तपोमयेति विश्वगीरिता चक्षुभुनुर्धुन् द्युदन्वन्ताक्षा अग्नेमूर्धसमुद्वात निपेतु सग्रहास्तारा जज्वलुक्ष दिशो दश तेन तप्तासुरा सर्वे दिव्यं त्यक्त्वा सवासवा ब्रह्मलोकं ययुर्विज्ञापयामासु शिक्ष चालभू दिवौचु विधे गजासुरत्पस्तप्ता वयं था कुला न शक्नुमो दिवि स्थातुं तस्ते शरणं गता विधेहु पश्म तस्य चान्या जीवयितुं कृपां लोकानन्दक्षयन्तयन्यथा हि सत्यं सत्यं च ब्रूमहे इति विज्ञापितो देवैर्वासवाद्य स आत्मभू ऋगुत्क्षादिर्भिर्ब्रह्मा ययो दैत्यवराशमं तपत्तं तपसा लोकान् यथा प्रापिहितं दिवि विलक्ष्य विस्मिता प्राहा विसंसृष्टिकारका ब्रह्मवाच उतिष्ठोत्तिष्ठ दैत्येन्द्र तपासितोऽसि माहिषे प्राप्तोऽहं वरदस्तात् वरं वृणु यथेप्सितं सनत्कुमार उवाच उत्तात् योत्थाय दैत्येन्द्र ईक्षमाणो दृशा विभुं गिरागदया प्रीतो गृणादेवं स माहिषी गजासुरुवाच नमस्ते देवदेवेश यदि दास्यसि मे वरम् अब्धोऽयं भवेयं कैस्त्विपुंभिकां निर्जते महाबलो महावीर्यो अजेयो देवादिभिः सदा
सर्वेषां लोकपालानां निखिलदिर्सुभिर्भो। सनत्कुमार उवाच एवं वृत्तशतघ्नतिर्दानवेन स तेन वे प्रदात् तत्साप्रीतो वरं तस्य सुदुर्लभम्। एवं लब्धवरो दैत्यो महाहिषक्स गजासुरा सुप्रसन्नमनासोऽथ स्वधाम प्रत्यपद्यत। स विजित्य दिशा सर्वा लोकांश त्रीन् महासुरा देवासुरमुनिष्यन्द्रा गन्धर्व गरुडो डोरगान् इत्यादि निखिला जित्वा वश्मान्ये विश्वजित् जहार लोकपालानां स्थानानि स तेजसा। दिवो ध्यानाश्रयाजुष्टं ध्यास्ते संत्रिविष्टपं महेन्द्रभवनं साक्षान्निमृतं विश्वकर्मणा। तस्मिन् महेन्द्रस्य गृहमाबलो महामना निर्जितलोक एकराट् हिमेभिवन्धाढ्रियुगसुरादिभिः प्रतापितेरुर्जित् चण्डशासना। स इत्थं निर्जित कुबेराड विश्यानि प्रियान् यथोपजोषं भुञ्जानो नातृप्य तद् यद् जितेन्द्रिय एवमेषमत्तस्य दृप्तस्योच्छास्त्रवर्तिना काले व्यतीते महती पापबुद्धिर्भूतता। महिषासुरपुत्रोऽसौ सञ्चिक्लेशद्विजान् परान् तपसान्यन्तरा पृथ्वां दानवासुरमर्दना। सुरानरांश प्रमुखान् सर्वक्लेशदुर्मती धर्मान्विता विशेषेण पूर्ववैरमनुस्मरन् एकसन्मन्समेतात् दानवोऽसौ महाबला अगच्छद्राजधानी वे शङ्करस्य गजासुरा। समागते सुरेन्द्रैः महान् कल्कलो मुने त्रासत्रातेति तत्रासीदानन्दवनवासिनां महिषासुरपुत्रोऽसौ यदा पुर्या समागता प्रमथान् सर्वानिर्वीर्यमदोद्वता। तस्मिन् वत्सरे देवा शक्राद्या सतत्पराजिता शिवस्य शरणं जग्मुनर्त्वा तुष्टुरादरात् नय वेद्यन्दान्वस्य तस्य काश्यां समागमं कलेशाधिक्यं तत्र्यानाथनाथाना विशेषता। देवाऊचु देवदेव महादेव तव पुर्य गतोऽसुरा कष्टं दते त्वज्जनानां तं जहि त्वं कृपानिधे। यत्र यत्र धरायां च चरणं प्रमिनोति अचलां सचलां तत्र करोति निज भारता। उरुवेगेन तर्वा पतन्ति शिखरे सह यस्य दोदण्डघातेन चूर्णिस्युक्षचिलोचया। यस्य मौलिजसङ्घर्षादगना व्योमतयजन्त्यपि निलीमानं च नाद्यापि जहुस्तत्केशसङ्गजम्। यस्य निःश्वाससंभारे रुततर्गा महाबध्य नद्योऽप्यमन्दकल्लोला भवन्ति तीमिभिः सह। योजनाना सहस्राणि नव्यस्य समुच्चय तावानेव हि विस्तारस्तनोन्नर्माया विनोत्स्य हि यनेत्रयो पिङ्गलिमा तथा तर्लिमा पुनः विद्युतानोह तेद्यापि सोऽयं समायाति सत्वरं ज्ञायां दिशं सम्भेति सोऽयं दुस्सह दानवा अवध्योऽहं भवामीति स्त्रीपुंभिकां निर्जिते। इत्येवं चेष्टितं तस्य दानवस्य निवेदितं त्वं रक्ष भक्तान् देवेश काशीर्क्षन् तत्परा। सनत्कुमार उवाच इति सम्प्रार्थितो देवैर्भक्तक्षन् तत्परा तत्र जगाम सोरं तद्धक्कामनयाहरा। अगत्यं तं समालोक्य शङ्करं भक्तवत्सलं त्रिशूलहस्तं गर्जतं जग्गर्ज स गजासुरा। ततस्योर्महाना शीतसम्रोदारुणोद्धता नानाशास्त्रस्त्रसम्पातेर्वीरारवं प्रकुर्वतो गजासुरोऽति तेजस्वी महाबलपराक्रम।
विव्याध गिरिशम्बाने स्तीक्ष्णैर्दान् वघातिनम् अथ रुद्रो रौद्रतनु स्वशरैरतिदारुणे तच्छरांशिदेतूर्णं प्राप्तांस्तिर्लशो मुने ततो गजासुरक्रुधोऽभ्यवधावतं महेश्वरं खड्गहस्तं प्रगर्जोत्तर्जहतोऽसीत्यद्वैमया तत स्त्रीशूलहेत्यस्तमायान्तं दैत्यपुङ्गवं विज्ञायावध्यमन्येन शूलेनाभिच्छिदा घानतं प्रोतस्तेन त्रिशूलेन स च दैत्यगजासुरा छत्रीकृतमिवात्मानं मन्यमानो जगोहरम् गजासुरुवाच देवदेव महादेव तव भक्तोऽस्मि सर्वथा जाने त्वां त्रिदिवेशानं त्रिशूलं समहारिणं तव हस्ते मम वधो माह श्रेयस्करो मता अंधकारे महेशान त्रिपुरान्तकस्वर्ग किञ्चिदिज्ञप्तुमिच्छामि तच्छृणुष्व कृपाकर सत्यं ब्रवीमि नासत्यं मृत्युञ्जय विचारय त्वमेको जगतां वन्द्यो विश्वस्योपरि संस्थिता कालेन सर्वं तव्यं श्रेयसे मृत्युरीदृशं सनत्कुमारवाच इत्याकर्ण्यवचस्तस्य शङ्करा करुणानिधि प्रहस्य प्रत्युवाचेशो महिषेयं गजासुरम् ईश्वरवाच महापराक्रमनिधे दानवोतं सन्मते गजासुरप्रसन्नोऽस्मि स्वानुकूलं वरं वृणु सनत्कुमारवाच इत्याकर्ण्यमहेशस्य वचनं वरदस्य हि प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा दानवेन्द्रो गजासुरा गजासुरुवाच यदि प्रसन्नो दिग्वासस्तदा नित्यं वसान मे इमां कृतिं महेशान त्वत्रिशूलग्रपावितां स्वप्रमाणां सुखस्पर्शां रणागन्नपनीकृतां दर्शनीयां महादिव्यां सर्वदैव सुखावहाम् इष्टगन्धी सदैवास्तु सदैवास्तव कोमला सदैव निर्मला चास्तु सदैवा सत्वती मण्डना महातपो नलज्वालां प्रापयापि सुचिरं विभो न दग्धा कृतिरेषा मे पुण्यगन्धनिधेस्तथा यदि पुण्यवतीनेषा मम कृति दिर्गम्बरा तदा त्वदङ्गसङ्गोऽस्या कथं जातोरनागरे अन्यं च मे वरं देहि यदि तुष्टोऽसि शङ्करा नामास्तु कृतिवासास्ते प्रारभ्याद्य धनं दिनं सनत्कुमारवाच श्रुत्वेति स वचस्तस्य शङ्करो भक्तवत्सला तथेत्युवाच सुप्रीतो महिषासुरजं च तं पुनः प्रोवाच प्रीतात्मा दानवं तं गजासुरम् भक्तिप्रियो महेशानो भक्तिनिर्मलमानसम् ईश्वरवाच इदं पुण्यं शरीरं ते क्षेत्रेऽस्मिन् सीमन्मुक्तिसाधने मम लिङ्गभवत्वत्र सर्वेषां मुक्तिदायकं कृतिवासेश्वरं नाम महापातकनाशनं सर्वेषामेव लिङ्गानां शिरोभूतं विमुक्तिदं कथयत्वेति देवशस्तत् कृतिं परिग्रह च गजासुरस्य महतीं प्रावृणोदि दिगम्बर महामहोत्सवो जातस्मिन्नहिन्नि मुनीश्वरा हर्षमापुर्जना सर्वे काशीस्था प्रमथास्तथा हरिब्रह्मादयो देवा हर्षनिर्भरमानसा तुष्टुस्तं महेशानं नत्वा साञ्जलयस्तथा हते तस्मिन् दानवेशे माहिषेः हि गजासुरे स्वस्थानं भेजिरे देवा जगत्स्वास्थ्यं वाप च इत्युक्तं चरितं शम्भोर्भक्तवात्सल्यसूचकं स्वर्गयं यशस्यमायुष्यं धान्यप्रवर्धनं य इदं शृणुयात् प्रीत्या श्रावयेदाशुचिव्रता स भुक्त्वा च महासौख्यं लब्धां ते परं सुखम् इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां पंचमे युद्ध
खण्डे गजासुरवधो नाम सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः।